My father passed away suddenly. Age of 54, no comorbidity, healthy. Sudden cardiac arrest, a third-degree heart block, and he was no more. His last words were, "Don't disturb my daughter. She has an exam tomorrow." I had to appear for the first professional exam the very next day, and I did. His last words, a testament to his faith in me, became my strength to carry on. And despite this tragedy, I persevered, appearing for exams while dealing with the grief of his sudden passing. His strength became my beacon, guiding me through grief and inspiring me to persevere against all odds. Good afternoon, everyone. Today, I have the privilege of sharing the remarkable journey of a woman who dared to challenge the status quo, breaking through barriers in a world often dominated by men. This is a story of resilience, of unwavering determination, and above all, of triumph. मेरी सबसे पहली यादों से ही जब मैं स्कूल या शायद उससे भी छोटी थी तो एक डॉक्टर बनने, मसीहा बनने का जज्बा, एक ख्वाहिश मेरे अंदर थी. It was more than just a dream. It was a calling that resonated deep within my soul. A dream to heal, to teach, to change lives, and to make an impact. And I still remember कि जब स्कूल में दाखिले का वक्त था तो मुझे हेडमिस्ट्रेस ने पूछा, "Bete, what do you want to be when you grow up?" And I very confidently said that I want to be a doctor, but at the same time, I wanted to be a teacher. And she felt so happy. उन्होंने कहा, शुक्र है कोई हमारे प्रोफेशन में भी आने का सोच रहा है. तो फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये ख्वाब मेरी हकीकत बनते चले गए. स्कूल की लाइफ, मेरा तालीमी सफ़र बहुत शानदार रहा. I was always a high achiever. स्कूल के किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी सेकंड पोजीशन हासिल नहीं की. I was always on the top throughout. और ये सिर्फ एकेडमिक्स तक महदूद नहीं था. Debates हों, किरत competition, poem recitals, drama, sports. I never settled for anything less than the best. And my consistent performance became a role model for the juniors. But then there was a time to choose the head girl of the school. And I wasn't chosen. And the reason that was given, we cannot lose our school position in the metric. We need you to focus. I won in the President Talent Scholarship. I won the gold medal as well, but I was not the head girl. And then I learned very early on that true leadership often means forging your own path. लेकिन फिर पढ़ाई की दौर में ये सारे शौक पीछे रह गए और तालीमी सफ़र मेरा फिर केनेड कॉलेज में हुआ दाखिला. और केनेड कॉलेज में दाखिले में भी आई वॉज अमंग द टॉप स्टूडेंट्स. एंड देन सब लोगों का एक ख्वाहिश कि अगर डॉक्टर बनना है तो केमकोलियन होना है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है. सो विद दैट ड्रीम आई अपीयर्ड इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम. हमारा बैच वो पहला बैच था जिसमें मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था और IBA की टीम कराची से आई थी कंडक्ट करने के लिए. बहुत सारे हाई स्कोरर्स एंट्रेंस की वजह से अच्छे मार्क्स नहीं ले सके थे, बट फॉर्चुनेटली आई वॉज अमंग द टॉप स्टूडेंट्स. आई हैड मेड इट टू द किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी. किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी वो जगह थी जहाँ मैंने बहुत सीखा. येट इट वॉज ड्यूरिंग माई सेकेंड ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज दैट माई वर्ल्ड वॉज शेक्ड. My father passed away suddenly. Age of 54, no comorbidity, healthy. Sudden cardiac arrest, a third-degree heart block, and he was no more. His last words were, "Don't disturb my daughter. She has an exam tomorrow." I had to appear for the first professional exam the very next day, and I did. His last words, a testament to his faith in me, became my strength to carry on. And despite this tragedy, I persevered,
appearing for exams while dealing with the grief of his sudden passing. His strength became my beacon, guiding me through grief and inspiring me to persevere against all odds. उसके बाद किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद हाउस जॉब का मरहला आया तो सब लोगों ने कहा कि लड़की है गायनी की हाउस जॉब ज़रूर करा ले. सो आई सेड मुझे ये तो नहीं पता कि मैंने क्या करना है आगे, गायनी नहीं करनी है. सो आई चोज मेडिसिन एंड सर्जरी. Medicine actually was my passion. I always wanted to be a physician. So I chose internal medicine. फिर जब आगे एग्ज़ाम दिया पार्ट 1 का और रेजिडेंसी की बात भी आई, उससे पहले भी मेरे सारे फ्रेंड्स USMLE और प्लैब की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे भी बहुत प्रेशर था कि सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू विल वेस्ट योर टैलेंट हेयर, तुम क्यों नहीं बाहर जाती. सो आई अप्लाइड इन लंदन एंड आई गॉट एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंदन एक्चुअली. बट फिर अपनी फैमिली और अपने वतन की खिदमत का जज्बा आगे आ गया और लंदन कहीं पीछे रह गया. और मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रेस्टिजियस ईस्ट मेडिकल वार्ड लायलपुर वार्ड में अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ किया. दिस चॉइस ऑफ जॉइनिंग मेडिसिन when it was not a profession, you know, medicine was not considered a female friendly profession. मुझे कहा गया डर्मेटोलॉजी कर लो, पैथोलॉजी कर लो, रेडियोलॉजी कर लो, ज़िंदगी अजाब हो जाएगी, इमरजेंसी आती है हर वक्त. So why not go for a basic sciences? Family life भी चलानी होती है ख़वातीन ने. But I stood with my passion. And this choice was a declaration of my independence, a statement that I would not be confined by the societal expectations. So then I started my residency in East Medical Ward, and within 2 years, I became the registrar of East Medical Ward. This was also very unusual in a ward which had very few females. Sometimes there was a whole ward of males, and I was the only postgraduate trainee at that time. And I became the registrar, जो typically एक influential male figure होता था. And I broke this stereotyping that females can be registrar as well. इसी दौरान पंजाब के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात का मौका मिला, तो मैंने उन्हें डॉक्टर्स के मसाइल के बारे में आगाह किया. मैंने उन्हें बताया कि हाउस जॉब में 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जिससे ज़्यादा तनख्वाह शायद ड्राइवर लेता है, और मेडिकल की रेजिडेंसी में 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है, जिसमें किसी भी इंसान का गुजारा मुमकिन नहीं है. उनको पेश किया कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. US और UK को तो छोड़ दें कि वो डॉलर और पाउंड्स की बातें करते हैं, लेकिन आप बांग्लादेश और इंडिया को ही देख लें. एंड विद दैट प्रेजेंटेशन डॉक्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम वर गिवन 100% पे रेज in house job and medical officer. As I was working as a senior registrar in Mayo Hospital, तो 2011 की ये बात है. 2010 में I cleared my FCPS and became a senior registrar. तो एकदम लाहौर में भूचाल आ गया. डेंगू, एक ऐसा वायरस जिसे ना हम जानते थे, ना पता था, ना किताबों में कुछ लिखा था. और ये एक ऐसा मुश्किल और कड़ा वक्त था कि जब मैं सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पर इमरजेंसी में काम करती थी, तो 12 घंटे की शिफ्ट में 1000 से 1500 डेंगू के सस्पेक्टेड केसेस आ रहे होते थे. पीपल वर पैनिकिंग एंड डाइंग. सारा दिन उनके लिए बेड्स अरेंज करते, ब्लड का इंतज़ाम करते, पैनिक फैमिलीज़ को काउंसिल करते, और शॉक में जो मुब्तला मरीज़ हैं उनकी जान बचाने में गुजर जाता. मुझे आज भी याद है 21 साल का वो नौजवान जो मेरे हाथों में दम तोड़ गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि डेंगू को कैसे मैनेज करना है. वी वर अनअवेयर एंड देयर वर नो टीचर्स. आई हैड टू लर्न डेंगू टू सेव लाइव्स एंड टू make life better for the suffering humanity. So it was not a medical crisis only, it was an emotional tragedy for me. So मैंने फिर WHO से राब्ता किया कि वो कोई ट्रेनिंग कराएं डेंगू की. मैंने देखा और सर्च किया तो WHO का थाईलैंड में एक कोलैबोरेटिंग सेंटर था डेंगू का. So I wrote to WHO कि आप पाकिस्तान में डेंगू की कोई ट्रेनिंग कराएं. और पहली दफ़ा एक डेंगू की ट्रेनिंग जो है वो WHO ने कंडक्ट की. सो वी वर अ ग्रुप ऑफ 11-12 पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हु अटेंडेड दैट ट्रेनिंग. और वहीं से मेरे डेंगू के सफ़र का आगाज़ हुआ. हुकूमत पंजाब ने कुछ डॉक्टर्स और कुछ सपोर्ट स्टाफ को डेंगू की ट्रेनिंग में बैरून ममालिक में भेजने का इरादा किया. फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आई वॉज सिलेक्टेड. आई वॉज द यंगेस्ट एंड द ओनली फीमेल कंसल्टेंट इन दैट ग्रुप.
सो फिर हम ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड चले गए, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर बैंकॉक, और फिर मेरा सफ़र श्रीलंका और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ श्रीलंका के साथ हम ट्रेनिंग करते रहे। और इस दौरान मैंने जब ये ट्रेनिंग की और सीखा, तो उस ग्रुप के अंदर मैं सबसे कम उम्र और अकलौती फीमेल कंसल्टेंट थी, नई नई सीनियर रजिस्ट्रार बनी थी। उन्होंने मुझे उसका टीम लीड बना दिया। एंड ऑल द प्रेजेंटेशंस दैट वी गेव अब्रॉड एंड आफ्टर आके जब डीब्रीफिंग सेशन भी देना था टू द हायर ऑफिशियल्स दैट व्हाट वी हैव लर्नड, I was the one to conduct that. So when I came back with a mission that now nobody should die of dengue. We should bring down the mortality. क्योंकि आपको अगर याद हो तो 2011 में 375 precious lives were lost due to dengue. So उस जज्बे के साथ मैंने ट्रेनिंग का आगाज़ शुरू किया और मैं फिर डॉक्टर्स को ट्रेन करती थी ऑन क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर। और मुझे मास्टर ट्रेनर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बना दिया गया। फिर मुझे WHO ने मास्टर ट्रेनर बना दिया। उन्होंने मुझे दोबारा से सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भिजवा दिया। सिंगापुर की ट्रेनिंग में आई वाज द ओनली क्लिनिशियन फ्रॉम पाकिस्तान हु वेंट, और वो एशिया पैसिफिक रीजन की ट्रेनिंग थी। मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए उससे अगले साल उन्होंने मुझे एज ए ट्रेनर इन्वाइट कर लिया। सो मेरे ट्रेनी से ट्रेनर का सफ़र सिर्फ 1 साल का था। और उसके बाद मैं जब वापस आई तो आई वॉज अपॉइंटेड द सेक्रेटरी फॉर डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ऑफ द कंट्री। देन आई वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ऑफ द country, and then I authored 2 sets of guidelines, और वो guidelines अभी भी पूरे मुल्क में जो डेंगू की ट्रेनिंग है उसके लिए। I've trained thousands of doctors, treated thousands of patients of dengue, difficult cases, they consult me. और फिर अब मैं एशिया पैसिफिक लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स भी डेंगू की कंडक्ट करती हूँ। सो ये मेरे डेंगू के सफ़र का आगाज़ था। इन्हीं डेंगू की वर्कशॉप्स में जाते हुए मुझे डेंगू की कॉन्फ्रेंसेस से इन्विटेशंस आना शुरू हो गए। दुनिया भर में डेंगू पे अपनी रिसर्च और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, एंड आई बिकेम अ नोन फिगर रिलेटेड टू डेंगू इन द कंट्री। एंड दिस एक्सपीरियंस paved my way for the COVID when the COVID came. So I was selected to be the core member of Corona Expert Advisory Group and Technical Working Group of Corona. फिर उसकी guidelines develop की, 4 sets of guidelines update किए, district भर में training कराती थी, ACs, DCs, healthcare professionals, health managers, सबको train किया, and at the same time I was also leading the critical care patient team. And बिकॉज आपको नए नए वेरिएंट्स आ रहे थे, लोगों में बहुत पैनिक था, सो सोशल और टेलीवाइज मीडिया पे पब्लिक अवेयरनेस का काम और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहा। इन दिस मेलस्टॉर्म आई इनिशिएटेड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन। दिस वाज अ कंस्ट्रक्ट सीकिंग टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ इंटरनल मेडिसिन, माई पैशन बैक। People were diverging into specialities. Somebody wanted to be a cardiologist, nephrologist, pulmonologist. Nobody was looking after as a holistic approach to a patient. Internal medicine is the mother of medicine. It deals with all the allied specialities of medicine, and you need an internist, a physician, to look after you. You don't have to go to 5 doctors for 5 different problems. You need your one doctor, your primary physician. So I wanted to bring that glory back to internal medicine. And it started with just an idea on a WhatsApp status on Facebook. So I said, why not a society of physicians? And it got so much appreciation that it actually morphed into more than just an organization. It became a beacon of collaboration, innovation, and advocacy of medicine. We crafted a vision to be recognized as the leader in patient quality care, advocacy, education, career satisfaction for the new residents to choose internal medicine as their specialty. As the founding Secretary General in Pakistan Society of Internal Medicine, I led various educational chapters. Now we have 20 national and 4 international chapters with thousands of members all across the globe of this society. I found immense joy in developing new courses, fostering international collaborations, and undertaking educational, research, and philanthropic projects under the umbrella of Pakistan Society of Internal Medicine. PSIM, Pakistan Society of Internal Medicine, it opened new avenues of collaboration and international linkages
and it became the part of the global community of internal medicine by being accepted as a member of the International Society of Internal Medicine in 2023. So now we are among 69 countries in the world who are members of this international organizations. I've been active on digital and social media, creating public awareness on different medical aspects, especially on dengue and COVID. And for this reason, I've been interviewed by many national as well as international media platforms, including BBC, Voice of America, Australian broadcasting agencies. And I'm very humbled to be the proud recipient of the Governor's Award and Presidential Award for my contribution to the health sector. During all this odyssey, I stumbled upon the Royal College of Physicians' Emerging Leadership Program, a revelation that perfectly embodied my passion for global capacity building and leadership. So it was as if the universe conspired to align my aspirations with an opportunity that would perfectly encapsulate my desire to lead, to learn, and to bring about a meaningful change in the healthcare landscape. The program's emphasis on empowering women professionals, the healthcare women physicians, globally spoke to the core of the beliefs and ambitions that I had. So I applied for that, I was shortlisted, interviewed, and I was chosen for that program. But then the thought of going away from the family, taking a break from the government job for a skill like leadership, it looked a little challenging to me at that point in time. So I thought, what should I do? So I talked to the RCP team and I convinced them to bring that program to Pakistan. So they said that they are going to pilot it globally in Pakistan, and they did. So with the collaboration of PSIM and RCP, we piloted the Emerging Leadership Program for women physicians in healthcare in Pakistan. We've done 2 cohorts, a cohort for the champions and for the mentees. And some of them are sitting over here. And now we've made a mentor-mentee relationship for the women physicians. 75% of the healthcare force is women in Pakistan. But when it comes down to the career progression, there are very few numbers. Less than 10% lead to the top leadership positions. This is something which is very, very disturbing. And we are ranked 145th out of 149th in the gender equity globally. So we are far below. So that is why this was an opportunity to groom our young medical professionals, females especially, who had left their medical career because of their family reasons or another reason. And I brought that, and now they are, because after the success of the Pakistan Global Project, RCP London is now piloting it in Iraq. So we were the first one to do it. So during this time, I was awarded the Charles Wallace Fellowship. It was again a competitive exam. I had to appear in an interview, and based on my interview, I was selected, and I had the golden opportunity to work at the world-renowned Oxford University and undertake a clinical attachment and Cambridge Clinical Trials Unit. This was related to antimicrobial resistant research, and resultantly, I'm actively engaged in introducing and promoting some international research projects in Pakistan in collaboration with Oxford University, INEOS Institute of Oxford, and Cambridge University Clinical Trials Unit. So this shows how stories, whether of women in the medical field or leadership, are in actual fact stories of leadership and empowerment. My journey symbolizes a break of barriers and redefine norms through toughness. ये सफ़र, ये कहानी सिर्फ एक ज़ाती कहानी नहीं है. ये इस बात की गवाही है that when we break that glass ceiling, there is so much that we can achieve. It is a call to action, to embrace the challenges we face, to lead with compassion, and to forge a future where leadership knows no boundaries and empowerment is the spark that ignites the lasting change.